Exactly. हम लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं.
Hi guys, I just want to welcome everyone who's watching. This is the webinar Mind Your Health by IFMS, the Indian Fraternity of Medical Students. Today we're going to be talking about mental health, and as you all know, we've invited a very distinguished guest, Dr. Samir Malhotra, to be with us. I'm going to be introducing him. Dr. Samir Malhotra is the director of the Department of Mental Health and Behavioral Sciences at Max Super Specialty Hospitals, Saket and Panchsheel, New Delhi. He has more than 25 years of experience in his profession and has worked as a consultant psychiatrist for many of those. He has undertaken a fellowship of the World Psychiatric Association in Florence, Italy, and World Psychiatric Association in Prague. Further, he went on to International Association for Child and Adolescent Psychiatry, Germany, for Sir Donald Cohen Fellowship, and is an active member of the NHS. Dr. Samir Malhotra has won several awards, such as the G.C. Borrell II Award and Global Network Awards for Tobacco and Drug De-addiction Research. He has been actively involved as a clinical researcher and as an educator for many of his years, and has also edited and written chapters from many different books on psychiatry. Today, Dr. Samir will be talking a little bit about the following topics: how to recognize a mental disorder, how to recognize whether the disorder is simply a phase or an actual disorder, how to differentiate between stress, anxiety, and panic attacks. And he's also going to speak a little bit about how to help yourself and other people around you. After this, we'll be having a short question and answer session with him. On to you, Dr. Malhotra. Thank you, Ekta, and thank you, Shreya and Saud, for making it possible. Uh, and thank you, IFMS team. Uh, not only do you kind of focus at this point of time in terms of understanding health and health parameters, you're going to be the future saviors of both life and health. And I think that's of utmost importance, both as of now as well as in future. Now, very commonly we come across this question of how do you recognize a mental health disorder? Because unlike a physical disorder where you can visibly see certain signs, you can palpate, you can percuss, you do not see those kind of things in psychiatry. So it's quite abstract as a line, but yet there are many concepts which have been proven over a period of time. And how we link up those concepts with neurochemicals and how those neurochemicals impact our mind, our behavior, is something that we study and teach in psychiatry. And we work through those as clinicians to help people get over their problems. The very important question here is, how do you recognize whether it is a disorder, a psychiatric disorder, or is it only a phase? Now, there's this rule of D that I usually say, which helps us differentiate between a phase and a disorder. So let me put it very clearly. Emotions, being emotional beings, we all go through different set of emotions. So it's very odd that you would continue to remain in the same emotional phase for quite some long period of time. So it is quite contextual. It is dependent on what you are thinking at that point of time, what you're going through at that point of time, that defines your emotional experience at that moment. And emotions cannot be a straight line. It's very difficult to put it as a straight line, just like you cannot have a straight line in your ECG. You cannot have a straight line in your EEG or the electroencephalogram because there have to be intonations. Similarly, mood also has intonations to it, but they are within range. That emotional intonation should not lead you into certain distressing phases. It should not lead you into something which is quite dysfunctional. It should not put you in a dangerous zone, or it should not lead you into some kind of a dangerous behavior, right? So little intonations, little fluctuations within the bounds of some control is quite normal. But if those emotions, they persist for a prolonged period of time, say if a person is feeling low, sad, depressed, and that persists for quite some time, maybe a week, 2 weeks and beyond, if there are cluster of symptoms associated with it, so it's lack of interest, there is easy fatigability, you feel dull most of the times of the day, you feel like crying, you are running through negative thoughts in your mind,
your behavior is also reflecting in the same, and you start having certain biological symptoms of disturbed sleep and appetite, then we say perhaps this is a zone of clinical How do we differentiate these? That is very important. And the best way to differentiate that would be to define different Ds. So one would be distress. If there's a lot of distress associated with a particular phase. The second is dysfunction. So it is affecting different your occupation. So if it is affecting different phases of your life, right, that is dysfunction. So distress and dysfunction. The third one then would be danger. So if you start having suicidal thought processes, you start having thoughts of harming yourself, or you start having quite a bit of angst towards others so that you can turn violent towards others. So that is entering into a danger zone. So D for danger, D for distress, D for dysfunction, and similarly D for disharmony. So what happens is you develop difficulty in your relationships also. It's very important to harbor a harmonious relationship with your own self, and harmony within leads to harmony in your relationships as well. So if there's an emotional disarray within you, if you are feeling very distraught, अगर अंदर से इतने परेशान हैं तो वही परेशानी की झलक आपके रिश्तों में भी दिखाई देगी. So disharmony is again something which is important. Then duration for which these symptoms last. So if you're feeling sad, if there's something bad that happens, unfortunately, you might go through a phase which makes you feel low and dull for a couple of days, maybe a week, 10 days. But if it persists, if the duration continues beyond 2 weeks, right? Maybe a month at times and beyond, then perhaps you are entering into a realm of a disorder or a psychiatric disorder which needs timely recognition and correction. So if I put it in an easy way, I would say dis-ease. So you're not at ease with yourself. Disorder, you're not that ordered. You know, distress, you are in distress, right? Dysfunction, disharmony, danger, and the duration for which these symptoms persist. These would, by and large, make a person understand whether one is, or maybe your friend, somebody known to you, maybe your patient in future is suffering from a psychiatric disorder. Similarly, some difficult experiences that people also go through. So it could be in terms of hearing something unusual, seeing something unusual, and quite untrue. If those kind of things are happening, so even that adds on and could be a psychiatric disorder and should be carefully looked into. So that is how you define a disorder vis-a-vis a particular phase. We cannot have a happy mood constantly. If that is happening, perhaps it could be hypomania or it could be entering into a manic realm or manic zone. So there are different kinds of psychiatric disorders. Coming to your other question, I think, which is quite relevant and important as to how do we define a line between stress and anxiety and perhaps anxiety disorders or panic. Now, stress is a very normal, natural experience of life. Anything that puts you through some different routine where you have to adapt or your coping skills are tested is potential stress. Uh, it could reflect biologically, it could reflect behaviorally, it could reflect emotionally, the way you process that stress in your mind. So it can become quite distressing, or it can become like a challenge and an opportunity for you to improvise your skills and cope with it in a better way. So a lot depends on how you deal with stress. And usually we talk about a stress performance curve where we say that as stress increases, the performance also increases to a certain point. But beyond a certain point, your performance starts going down. It is that point which leads to decline in performance from where your distress begins. So certain point, certain phase of the graph is considered as eustress, which is good stress, which helps you perform better, because with that stress your performance goes up. So many times I come across students who come and visit me and say, sir, हमें एंजाइटी नहीं हो रही है, हमें घबराहट नहीं हो रहा, तो एग्जाम का समझ नहीं आ रहा, तैयारी नहीं हो रही है. And
when they are a bit anxious about their exams, they start focusing better on it. Their ability to grasp information gets better. They're able to memorize things better. They become more serious about giving their examinations, and their results are also better. But if they are so very anxious, so very restless that they start having physical symptoms of significant distress, their sleep and appetite gets disturbed, they are having racing heartbeats, palpitations all the time, they're having butterfly sensation in their tummy, they're having tremors, and they feel as if they're forgetting whatever they've learned. So then now it is becoming distressing. Now they're entering into that D zone, and that is something which needs correction. So that becomes a disorder. So stress is a part and parcel of life. Problems are part and parcel of life. A lot depends on how you deal with that stress. A lot depends on how you deal with that piece of information and the context and the problem, the way you solve that problem, the approach that you take, that defines health. There are people who get into maladaptive coping strategies. So there would be some who would get into drugs of abuse, whether it is grass or weed, cannabis as we call it. It could be other experimentation with other drugs of abuse. It could be inhalants. It could be the increase in smoking, cigarette smoking. It could be hookah smoking. It could be drinking alcohol. If those kind of things go up, then they are not considered as good coping abilities. That is a bad way of coping. Another thing that we see at times in youngsters coming up in a big way is self harm. So they start cutting themselves, they start taking some tablets in excess, they take an overdose. Now, those are not good things to get into because that's not going to solve your problem. That is just going to escalate it. That is not even going to help you escape from the problem because the moment you realize you're out of it, you realize the problem is still there and you'll feel that it is becoming all the more unsurmountable. So, important is how you resolve that conflict and that stage. Now, whenever there's a stress or a potential stress, which is a challenge both to your biology, to your physiology, as well as to your emotional and behavioral responses. Uh, there's a stimulation of your sympathetic nervous system. So, if we are all aware, most of you are medical students, obviously, you would be aware. Some of you who are from the non medical fraternity, it is very important to understand that autonomic nervous system would have two main components. Uh, One would be the sympathetic nervous system, the other would be the parasympathetic nervous system. And parasympathetic nervous system is responsible for inner homeostasis. It's important for maintaining the hormonal cycle within you. It's important for your regular sleep wake rhythm. It's responsible for various rhythms of the body, right? So when we focus on yoga, when we focus on certain sport exercises, when we focus on meditation, when we talk about mindfulness, we are trying to strengthen your parasympathetic nervous system to bring in this inner harmony within you. Whereas to the contrary, if you are facing any potential threat, then you have to enter into a fight or flight mode in order to save yourself. So your survival instinct becomes super active. And that survival instinct basically stimulates your sympathetic nervous system. When we talk about the sympathetic nervous system, it's basically meant to stimulate your body, right? To stimulate you. So in that phase of stimulation, you release more of adrenaline in your system. The adrenal gland sitting on top of your sympathetic nervous system releases adrenaline. And that release of adrenaline is something which would then lead to palpitations, racing heartbeats. That will lead to constriction of your blood vessels. That could also lead to gasping for breath. So you start breathing very fast, isn't it? That could lead to blurring of your vision because of dilation of your pupils. Now, just try to understand it from an evolutionary perspective. Evolutionary perspective would mean that this. Just imagine this scenario that uh, oh, in the past years, maybe as a part of evolutionary process, when human race was still hunting in forests and had to save oneself from the attack of wild animals. Now, there you required stimulated sympathetic nervous system to be able to fight or take a flight. Dark jungle, middle of the wild, you had to have proper vision so that आप दूर तक का देख सकें. So your pupils had to be dilated at that point of time. You required a lot of energy in your limbs. To get that energy in your limbs, where do you get that energy? Where do the muscles get that strength? They get it through the oxygen and glucose, isn't it? Where does the oxygen and glucose come to the muscles? It comes through the bloodstream.
And how does the blood rush to your muscular system or musculoskeletal system? It would rush through your blood vessels, right? And what would push it? What would pump this blood would be your heart. So the heart needs to pump fast. So if you look into the role of adrenaline here, it is basically meant to encourage or help you fight or take a flight. Is it clear? So at that point of time, because you need a lot of oxygen, you start gasping for breath. You take in deep breaths, fast breaths. So when you're taking fast breaths, at that point of time, you're raising your oxygen levels in the blood so that more oxygen enters into your musculoskeletal system for utilization. And because you are breathing very fast at that point of time, you increase the level of oxygen in the blood, you reduce the level of carbon dioxide in the blood. We call it as hypocapnia. When carbon dioxide goes low in your blood, the calcium also falls in your blood. And when calcium falls, it leads to tetany. So people start having, kind of twisted hands at that point of time. They're grasping for breath. So when we see those kind of presentations coming to the emergency setup in the hospital, they initially go through a cardiac check. And most of the times it all comes as normal. They go through the trop test and everything comes as normal. And then we are called for. And what we are seeing is a typical faces, gasping for breath, heartbeat going very fast, systolic rise in blood pressure, carbon dioxide levels low in the blood. When you get all those evaluations done, you realize this person is having a panic episode, which is a fight or a flight response. And in panic, there's a sudden rise in anxiety and then there's a sudden fall, right? It is for a short span of time, maybe 10, 15, 20 minutes. And at that time, the calcium levels also drop. So if you look at the evolutionary perspective, then we understand what is happening, right? Why the blurring of vision? Because the pupils dilate. Because in the wild, in the dark forest, you need to see very far. So from that perspective, you will understand how these neurochemicals and hormones are intertwined in the system and how they help you through the situation. So when do we define different anxiety disorders and panic and various other disorders? So what is a generalized anxiety disorder? A generalized anxiety disorder would have, uh, you know, it is generalized. So it is not specific to a particular situation or to a particular animal or to a particular context. So there'll be free floating anxiety. There'll be fear of unknown. It'll be generalized in all spheres. So a person might have palpitations, may have breathlessness, may have anxiety feelings, may be feeling negative in a thought process, apprehensions about the future, maybe having churning in the tummy, maybe having irritable bowel alongside, maybe having increased frequency of urination. Just imagine an interview situation, an examination situation, but just before going to the stage to perform, many people would go through that. But there are people who go through that all through the day. And it is generalized. It's not localized to a particular situation or context. We call it as generalized anxiety. The moment it is localized to a particular situation, there are people who cannot sit in a closed chamber. They start experiencing all these symptoms when they are put in a closed chamber. They cannot travel in a lift. They cannot take a flight. So there is claustrophobia there, isn't it? There are people who cannot go to a height. I mean, they don't enjoy those swings. They cannot look down from a height. That is acrophobia, right? Similarly, there are people who cannot see blood or blood products. There are people who cannot see water bodies. They feel quite anxious seeing those. So different kinds of phobias. One of them is agoraphobia, where you're fearful of traveling all by yourself or traveling alone, and you need to have somebody with you, people escorting you, so that there's somebody to take care of you. It's fear of going into places where you feel escape might become difficult, right? So there are different kinds of anxiety disorders. Phobias is one category, which is localized to a context, to a person, to an animal, to a situation. Similarly, we talked about generalized anxiety, which is generalized. Then we have panic. I've given you an example of panic disorder. So when you go through those kind of sudden increase in anxiety symptoms manifested both physically as well as cognitively. Cognitive is your thought process. So that person is suffering from panic disorder. We did discuss about certain symptoms of depression, and just to highlight a few there: clinical syndrome of depression, which is very common. And why I'm focusing on anxiety and depression? Because these are the two most common psychiatric disorders that we get across the population. And recently, also post COVID, post lockdown and the kind of phases that people went through, the new COVID lifestyle, we tried to conduct
a nationwide study, a web-based study, which was recently in print also in the Times of India. And this was basically talking about the prevalence of anxiety and clinical depression and symptoms of anxiety and depression. What was what we were trying to look at, and it did bring about certain results which were eyebrow raisers. And what we realized was that see, the population that was tapped was not the clinical population, it wasn't the patient population that was tapped. In fact, that was an exclusion criteria. We did not roll this study to our patients because we didn't want to tap, whether they have anxiety, because we knew they had anxiety or depression. Now, we were looking at the so-called general population who is unaware of suffering from any psychiatric disorder, and they are unaware of being on any treatment for they are not on any treatment for psychiatric disorders. So that kind of population, which is so-called general population of the country, and the sample size there after meeting the exclusion criteria was 1069, and out of those people, that number, approximately 55% met the criteria for significant anxiety requiring treatment. So 1 in 2, roughly speaking, would require some kind of treatment. And similarly, 1 in 4, they were about, I think, 27%, if I'm not wrong, who were suffering from clinical syndrome of depression. I'm not talking about mild depressive symptoms, I'm talking about significant depressive symptoms. And out of those 1 in 4, what we realized was that about approximately 20-27%, I'm not around that figure, were the ones who were having some suicidal thoughts in their mind, or the wish to die, or better if we were dead. So those kind of negative thought processes would run through their heads one at least once during this particular phase. And out of those also, what we found was that about 10% had regular recurrent thoughts of self-harm or suicide, so which comes to roughly about 3% of the total population tapped. So it's quite a huge number. If we try to extrapolate it to the entire population of the country, it will be huge numbers who require attention, immediate attention, treatment referrals, recognition, sensitization. And I think from that perspective, today's webinar is a very welcome step to sensitize, to understand, and to realize that this is not something very uncommon. It's not something which is not going to affect me or my family or my neighborhood or my friends. 1 in 2 anxiety disorders is what we are talking about here. So every family unit, the basic would also require at least 2 people to make a family. And you can imagine, so it's entering every household then. So please do recognize them in time. And we were talking about the clinical syndrome of depression. A clinical syndrome would mean a cluster of symptoms. There are 3 basic core symptoms of depression. One is sustained sadness of mood. The other is easy fatigability. So you feel tired at the drop of the hat. So many times people would say कि थोड़ा सा काम किया और थक गए, काम नहीं होता, जल्दी फटीग फील करते हैं, थक जाते हैं. And the third symptom, there is lack of interest in activities which are otherwise pleasurable. तो अगर किसी को म्यूजिक का शौक है, वो म्यूजिक नहीं सुनना चाहेगा. किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है, उसका मन नहीं करेगा. किसी को खेलने का शौक है, उसको उस गेम में मजा नहीं आएगा. तो ये सब चीजें आप देखेंगे उसके अंदर. और अगर ये 2 हफ्ते से ज्यादा, एटलीस्ट 2 out of these 3 symptoms, these are the core symptoms of depression. Out of these 3, if 2 are present for at least 2 weeks duration, then we say perhaps the person is suffering from a clinical syndrome of depression. अब alongside क्या symptoms आएंगे, biological symptoms भी disturbance आ जाती है. Sleep में, appetite में disturbance आ जाएगी, कई बार libido में disturbance आ जाती है. इसके साथ साथ ideas of guilt, ideas of worthlessness, ideas of helplessness, ideas of hopelessness. तो negative view about the self, ideas of worthlessness. I am worthless, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार. Ideas of helplessness, nobody understands me, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा. There's no help available. So whom should I go to? You feel isolated, you feel all by yourself, you feel miserable. Third is negative view about the future. That's the worst possible, because you can struggle through a difficult phase today thinking that tomorrow is going to be somewhat better. कल की आस में आप आज की मुश्किलें काट लेते हैं, पर जब कल की आस ही खत्म हो जाए, होप ही खत्म हो गई, then you have ideas of hopelessness. And that is when you are taken to a brink of suicidal thought process and suicide or suicidal behavior. So that is the way a person starts thinking in a phase of clinical depression. छोटी छोटी गलतियां हर इंसान से होती हैं. To err is human. कई बार वही गलतियां बढ़ बढ़ के आपको महसूस होने लगती हैं. Ideas of sin, ideas of guilt,
कई बार आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे बीमारियां पढ़ना शुरू कर देते हैं, हल्का सा कुछ सिम्टम होता है फिजिकल, थकान हो रही है, वजन कम हो रहा है, ये सब सिम्टम्स कई बार होते हैं डिप्रेशन में भी। तो आपको लगता है कि कहीं मेरे को कुछ और बीमारी तो नहीं होगी, आई होप आई हैवंट कॉन्ट्रैक्टेड सम मेजर इन्फेक्शन और सम कैंसर और समथिंग ऑफ दैट नेचर। तो आप उस तरह की चीज़ें इंटरनेट पे पढ़ते हैं, अपने गूगल डॉक्टर बन जाते हैं, और वो सब करते हुए देन यू रियलाइज दैट you, and it's called as the third year syndrome also, when you enter the third year of medical studies. I remember we used to have a class where the teacher would invariably, you know, come and discuss about this difference between normal and being through a disorder or going through a disorder. And they would tell us very clearly that now that you'll be reading morbid issues from third year onwards, you'll be reading about pathology, you'll be reading about microbiology, you'll be reading about, all, because before that you're just studying the normal physiology, biochemistry, and anatomy of the body. But subsequently, you're reading about ailments. And when you start reading about pathogens and ailments and pathology, you start extrapolating information and applying it on yourself. They used to say कि आपको ना वो symptoms होने शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा आपको ये बीमारी तो नहीं, वो बीमारी तो नहीं. So that's called as a third year syndrome for the medical students. So that's what most of the people suffering from depression would also get into. They start having hypochondriacal thought processes. Hypochondriasis is with regards to thinking as if they have some major ailment, right? Then another, apart from depression, I mean, in depression also you've got different subcategories. You have mild, moderate, severe, depending on the number of symptoms and the severity of those. People can have psychotic symptoms alongside depression. So, uh, when we say psychosis, we are basically talking about delusions, which are false beliefs. We are talking about hallucinations, wherein you are able to see, hear, or perceive things which are not true. So people start hearing some voices, which we call as auditory hallucinations. At times, they start seeing certain things, which are visual hallucinations. At times, you could have hallucinations with respect to taste, gustatory hallucinations. You can have somatic, which are bodily hallucinations. You can have tactile, which means on the skin. You feel as if there's something crawling on the skin. So all these kind of hallucinations would also mean that you have some kind of an inherent psychotic phenomenon going on. Whether it is organic psychosis, whether it is functional psychosis, is something that one needs to decipher and understand. Certain drugs of abuse can also lead to certain hallucinatory experiences. Uh, Apart from that, I mean, when we look into the psychotic group of disorders, schizophrenia is one such disorder where people feel threatened, they feel insecure, they become paranoid, they feel as if people are conspiring against them, they might harm them, uh, they lose trust. The very fabric that connects one human to another or helps you bind relationships is a factor of trust. Uh, the person suffering from schizophrenia loses that trust. So you start losing trust in people around you, feel as if your own family members might have been replaced by imposters. Maybe they have also sided with your perpetrators and are there to harm you. When you start having those kind of thoughts and those kind of fearful experiences, you start hearing things. At times, you start hearing running commentary about your behavior. So if you're bathing, you start hearing about how you're bathing. So your own privacy about your own self is lost at that point of time. And this boundary between self and others and the environment becomes a bit blurred. And there are some thought alienation phenomenon which also take place where you feel your thoughts are no longer within the confines of your control. They are being played with by others. If those kind of things start happening, then you feel very insecure. And if you try and place yourself in the shoes of that person who feels being constantly monitored 24/7 by people who are out there to harm him or her, look at the plight of that person, how scared, how insecure, how aggressive that person might become. So that is something to do with schizophrenia. Similarly, the people could have delusions of infidelity towards the partner, and they can have a very bad marital bond and marital disharmony because of the same. So disorders can lead to distress, they can lead to dysfunction, like I said, they lead to problems in sustaining an occupation, because if you're feeling threatened and if you're feeling insecure, then you're not able to trust. And when you're not able to trust, you're not able to hold on to your jobs also. At times, uh, you know, the disharmony in relationships also spoils your quality of life. So all these things put together, I think it's high time we do realize the importance, and I think it's a welcome step of starting this particular series of
destigmatizing psychiatric problems, understanding the very core and sensitivity involved in psychiatric problems, and that anybody could be affected. No one is immune, no family is immune, no society is immune, no nation is immune. And today's age of technology, I think it can help us in terms of understanding these and recognizing them quick to sensitize people in a better way. Media has a large reach, and so that people suffering are not stigmatized, are not made fun of. It is not that they are responsible for having it. Part of it is genetically inherited, so there could be polygenetic inheritance, and part of it is also environmental factors playing a role. So what happens is when a person is already struggling and others in the environment are making fun of without any fault of that individual who's anyways a victim of the problem, the person is left isolated in a zone which is quite difficult for the person to get over by himself or herself. And many times we start giving unwanted advices. Do yoga, exercise kar lo, tum theek se khate nahi ho, tum theek se sote nahi ho, uठते नहीं हो. So we start putting the blame unknowingly, unwittingly, in this effort to help that person. But in a way, it's not that the person doesn't understand what he or she is going through when you're struggling through a phase of anxiety and depression. That person also wants to get over it, but the person feels very helpless. And that's the time when you need correction of those disorders. When we look into the neurochemicals, very briefly, I'll touch upon certain neurochemicals. We talk about low levels of serotonin. Serotonin is something which is meant for your well being. तो लाइक वी आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, या हम हिंदी में बात कर रहे हैं आपस में, या कोई भी आपस में कम्युनिकेशन चैनल हमारी जो बातचीत होती है कि एक लैंग्वेज के साथ जुड़ती है, इसी तरह से ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ लैंग्वेज ऑफ न्यूरोकेमिकल्स, यानी रसायनों की भाषा. And in that, there's the release of neurochemicals into the cleft, into the synaptic cleft. Synaptic cleft is a junction between the nerve cells. तो वहाँ पे जब न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है सैनेप्टिक वेसिकल में, तो वो फिर उसके आगे जो अगला सेल है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है बीच में, दैट इज रीअब्सॉर्ब बाय द पेरेंट सेल एंड डिस्ट्रॉयड. सो देयर इज अ कांस्टेंट रिलीज and absorption by the subsequent cells, and then reabsorption of whatever is left by the parent cell, and it's destroyed. Reabsorption and destroyed. This happens in all of us. But when the pace of reabsorption and destruction exceeds the pace of release, ठीक है, जब आपका reabsorption process कुछ ज़्यादा तेज चल रहा है और उसकी destruction चल रही है, so it leads to the deficit of the neurochemical in the cleft, क्योंकि आपने एक तरह से थूका और थूक के चाट लिया, तो वो ज़्यादा बचा नहीं केमिकल इन द क्लेफ्ट. जब वो ज़्यादा बचा नहीं क्लेफ्ट के अंदर, तो दैट लीड्स टू a deficit in that particular neurochemical. In depression, people talk about deficit in particularly serotonin. It could also be in norepinephrine, and it could also be in dopamine. So when we talk about serotonin, serotonin का काम क्या है? It acts like a sieve, एक छाननी का काम करता है, to prevent all negative thoughts from coming into your conscious awareness constantly. अब आप सुबह उठते हैं तो नहीं सोचते छत गिरेगी मेरे सिर के ऊपर, या सब मेरे साथ बुरा ही बुरा होगा, है ना? तो कई सारी नेगेटिव ऐसे थॉट्स हैं which are kept at bay. So our mind doesn't allow those thoughts to enter into our head. Most of the times they don't enter conscious awareness. Alt control delete हो जाते हैं कुछ thoughts automatically. ये serotonin help करता है. Serotonin also has a role to play in the pain pathways in the body to some extent. Similarly, serotonin is also important for focus, for concentration, for self-confidence, for decision making. राइट? जब ये सेरोटोनिन कम होने लगेगा तो ये सब प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे. और बहुत एक्यूट डेफिसिट जब सेरोटोनिन का होने लगता है, बहुत कम हो जाता है, तो देखा गया इन सुसाइडल बिहेवियर्स, और in aggressive behaviors, many a times in impulse discontrol also, low levels of serotonin have been documented in the brain, right? Similarly, obsessive compulsive disorders, जहाँ पे कुछ करके बार बार चेक करने की जरूरत होती है. I often say dissatisfaction is the core of ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, यानी कुछ भी करके तसल्ली नहीं होती, बार बार करना. कई बार नंबर्स को लेके शुभ अशुभ हम सोचते हैं ये हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. एट टाइम्स वी गेट इनटू वॉशिंग आवर हैंड्स रिपीटेडली. अब ये कोविड क्राइसिस में वैसे भी हाथ धोने, पर जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा वॉशरूम से ही बाहर नहीं निकलेंगे, एंड दे विल बी यूजिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डिटर्जेंट्स, एंड दे वुडंट बी वॉशिंग देयर हैंड्स ओनली टिल हेयर, दे विल बी वॉशिंग देम ऑल थ्रू, पूरा दिन उसमें. तो ये चाहे वॉशर्स हैं, चाहे चेकर्स हैं, चाहे नंबर्स को लेके है, चाहे सिमेट्री को लेके है, और उसके साथ एसोसिएटेड कंपल्सिव बिहेवियर. सो रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स, राइट, which you know are absurd, you want to get rid of them, you know they are your own, but you are losing control over them. It could be an imagination,
इट कुड बी इमेजरी, इट कुड बी एन इम्पल्स, इट कुड बी अ थॉट। जब इस तरह की चीज़ें आपके जहन में बार बार आ रही हैं, दिमाग में बार बार आ रही हैं, देन यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और उसके लिए फिर लोग बार बार एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं। मन को या तो मेंटल कंपल्शन होंगे, तो मन में किसी चीज़ का नाम लाएंगे, कोई इमेज लाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे स्टार्ट थिंकिंग कि अगर हमने कुछ गलत सोच लिया तो गलत हो जाएगा। राइट? ऐसा नहीं, गलत सोच लेने से गलत नहीं हो जाएगा, करने से होती हैं चीज़ें। सो एक्शन से चीज़ें चेंज होती हैं। मैं सारा दिन सोचता रहूँ कि मेरे कमरे की जो कुर्सी है ये अपने आप उठ के यहाँ से हिल जाएगी, मैं सब तंत्र मंत्र लगा दूँ, नहीं हिलती जब तक मैं खुद उठ के उसको नहीं हिलाऊंगा। राइट? सो कमिंग टू द थर्ड major area of what do I do to help myself out of it and how do I help my friend out of it। तो सबसे पहले जब आदमी परेशान होता है ना, कोई भी परेशान है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, तो उसको उस समय समझने की ज़रूरत है। हम लोग उसको समझाना शुरू कर देते हैं, गलती करते हैं। There's a need to understand that person first. You know, we become preachers, we become advisors all of a sudden, we become counselors। है ना, आजकल ये टर्म बड़ा हम यूज करते हैं, काउंसलिंग कर दो इसकी। तो ये चीज जो है ना, पहले समझना जरूरी है, काउंसलिंग तो बाद में करेंगे। ये वर्ड बड़ा कैची हो गया आजकल, फ्रेज काउंसलिंग करवा लेते हैं, थेरेपी करा लेते हैं, है ना। बट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। विदाउट असेसिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन वी गो अहेड विद काउंसलिंग, इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप किसी दर्जी के पास भी जाते हो, कपड़ा बना दो, उसको पहले नाप तो दोगे ना अपना, तभी वो कपड़ा बना के सिल के देगा आपके नाप का। सीधा तो नहीं बना के कुछ दे देगा। राइट? आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा ले जाओ, पर उसको नाप तो देना पड़ेगा अपना। तो उसी तरीके से काउंसलिंग बढ़िया से बढ़िया हो, पर पहले नापना तो जरूरी है ना, कि किस चीज की काउंसलिंग करनी है, क्या करना है, और उसकी जरूरत भी है कि नहीं है, कि दवाई की ज्यादा जरूरत है उस समय। ठीक है? सो फॉर दैट, द फर्स्ट थिंग इज मेक दैट पर्सन फील दैट दैट पर्सन इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। उसकी जरूरत है उसके रिश्तेदारों को, आप लोगों को। ठीक है? ताकि दैट पर्सन डजंट फील आइसोलेटेड, दैट पर्सन डजंट फील अलोन। क्योंकि जब वो अकेला हो जाता है, आइसोलेटेड फील करता है, उसको लगता है उसको कोई नहीं समझ रहा है, तब वो ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने की कोशिश करता है। तो उस समय किसी का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? दूसरा, अवेलेबिलिटी रखो उसके लिए। जब केयर वो होती है जैसी अगला चाहे देनी। आपका खाने को मन है पर्टिकुलर किस्म की दाल, और खिला दे हम आपको दूसरी, चाहे अच्छी से अच्छी बना के खिलाएं, आपको स्वाद भी ना आएगा उसका इतना। तो उसको किस तरह की केयर की ज़रूरत है उस समय? केयर वो है जैसी उसको ज़रूरत है उस समय, थोड़ी सी वो भी ज़रूरत है, उस चीज़ का ध्यान रखें। और तीसरा, अगर आपको लगता है कि वो ही स्ट्रगलिंग और शी स्ट्रगलिंग आउट ऑफ अ फेज, उसका मजाक मत बनाओ, है ना। उसको सबके सामने ओपनली, खुलम में डिस्कशन करने से वो आदमी और डरता है, और इनसिक्योर फील करता है, और स्टिग्मेटाइज फील करता है, क्योंकि उसी समाज में उसने रहना है। तो ज़रूरी है कि उसको आप टाइमली एनकरेज करें फॉर अ प्रॉपर प्रोफेशनल टाइमली हेल्प, वो बहुत ज़रूरी है। और कई ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट्स भी आ जाते हैं। दीज आर ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स। फिर लोग कई बार सोचते हैं कि इससे हमें आदत तो नहीं पड़ जाएगी, लत तो नहीं लग जाएगी मेडिसिन की। ऐसा नहीं है। अगर आप एक डेफिसिट को पूरा करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसकी आदत क्यों लगेगी आपको? पर हाँ, वो कुछ देर खानी पड़ती है, जल्दी बंद नहीं करते। कई बार रिकरेंसेज होते हैं डिसऑर्डर्स के अंदर, कई बार जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं, हैवी फैमिली लोडिंग्स होती हैं, उसमें लंबी दवाइयाँ चलती हैं, उसमें हम जल्द बंद नहीं कर सकते। जिस लाइक एक शुगर पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, उसको आप दवाई दे रहे हैं, तो क्या उसको आदत लग गई दवाई की? उसको दवाई बंद, उसका शुगर ठीक हो गया तो क्या वो अपनी दवाई बंद कर दे? नहीं, वो खाएगा ना दवाई को। तो इसी तरह से क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, इनमें दवाइयाँ चलती हैं, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर एक डर होता है हमें स्टेरॉइड्स खिला रहे हैं। साइकाट्री में हम लोग स्टेरॉइड्स नहीं यूज करते, बल्कि स्टेरॉइड्स के साथ तो यूफोरिया, डिस्फोरिया, हेलुसिनेशंस, ये सब चीज़ें हम लोग कई बार देखते हैं। तो हम लोग स्टेरॉइड्स कम से कम इस्तेमाल करते, कि हमारी साइकाट्रिक प्रैक्टिस में स्टेरॉइड्स हम नहीं यूज करते हैं। Right? We try to correct the neurochemical dysfunction which is happening within the brain cells। जो दिख रहा है वो बिहेवियरली दिख रहा है, इमोशनली दिख रहा है, नींद में, भूख में तब्दीली दिख रही है, पर जो चल रहा है दिमाग के अंदर वो न्यूरोकेमिकल फायरिंग में डिस्टर्बेंसेस हैं, जिनको करेक्ट करना जरूरी है। एंड इट्स एन इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट न्यूरोकेमिकल्स। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो केवल मन के रूप में, नींद के रूप में, भूख के रूप में, वजन के रूप में चेंजेस नहीं आ रहे, वो बिहेवियरल चेंजेस तो आ ही रहे हैं, पर साथ साथ बॉडीली चेंजेस भी आ रहे हैं, बिकॉज माइंड बॉडी इंटरकनेक्ट है। तो एक पूरा रेल्म है साइकाट्री का, जिसको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स कहते हैं, जहाँ पर सोमा मतलब बॉडी, साइको मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। राइट? एंड रिमेंबर, ये साइकोलॉजिकल डजंट मीन आपने क्रिएट कर लिया अपने लिए। राइट? दैट मीन्स there is a flow of neurochemicals, immune system, and the hormones which links your mind with your body. And mind is a function of your brain, and brain is a structural aspect of your body. Right?
सो इन अ वे इट इज योर बॉडी ओनली। तो जैसे खांसी जुकाम का इलाज करते हैं वैसे ही माइंड की प्रॉब्लम्स का भी इलाज होना चाहिए उसको। और ये पैरेलल पैंडेमिक चल रहा है, एक तरफ कोविड पैंडेमिक चल रहा है, साथ साथ जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं लोगों की, एक अलग पैंडेमिक चल रहा है जिसको रिकॉग्नाइज करना बहुत आवश्यक और ज़रूरी भी है, राइट? So Yes, sir. I think I've tried to cover the difference between a disorder and a normal, so-called normal phase that people go through. We try to cover how much stress is good. So long as it's improving your potential, your abilities, it is good. Beyond a certain point, when it leads to distress and dysfunction, and leads you to enter into some kind of dangerous behavior, both for yourself or others, or makes you believe in things which are delusional or wrong or false, or makes you disorganized, or leads to disharmony. So all those D's would basically push you in the domain of a disorder where you are not at ease with yourself. So dis-ease, disorder. The third one is, what do I do now? This is very important. That's what we were covering. And one is to help your friend. If your friend is in need, be available. है ना, ऐसा नहीं कि उस समय आपको नहीं यार मैं बाद में बात करूंगा, अगला बात करने की कोशिश कर रहा है, आप उसका फ़ोन ही नहीं ले रहे हैं उस समय जब वो परेशानी में है। ही नीड्स टू स्पीक हिज माइंड और हर माइंड, और वो एक वेंटिलेशन और कैथारसिस प्रोसेस होता है। जैसे एक बंद प्रेशर कुकर है, वो खुले, उसको बोलने दो जो बोल रहा है। हो सकता है वो गुस्से में कुछ बोल रहा है, नाराज है आपसे, Mhm. बोलने दो एक बार। उस समय उसको डोंट कट दैट पर्सन शॉर्ट. That is a release. That doesn't mean whatever the muck is coming out has to be absorbed by you people. Just let it go out. Let it be released. Good listening skills as a friend, as a relative, as a family member would help. Availability would help. Timely recognition, and not to make fun of that person. Empathy, empathize with that individual, and make sure that the person gets into appropriate timely ट्रीटमेंट इंटरवेंशन। तो ये तो हो गया एज अ फ्रेंड। अब अगर आपके साथ ये हो रहा है Mhm. तो कैसे करेंगे? आपके साथ अगर हो रहा है तो पहले तो गेट द बेसिक्स राइट, है ना। सबसे पहले अपनी स्लीप एक साइकिल को रेगुलेट करो। आजकल हम लोग कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, है ना। और ब्रेन के अंदर एक एरिया हाइपोथैलेमस, मैं अक्सर बोलता हूँ, एग्जाम्स में भी आता है आप लोगों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को तो बहुत आता है रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज सीट ऑफ ऑल हार्मोन्स, ठीक है। एंड हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो एन इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन इन अ वे, एंड हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सर्केडियन रिदम। तो आपकी बॉडी की रिदम को एनवायरनमेंट की रिदम के साथ मैच करता है। तो व्हेन यू फ्लाई टाइम जोन्स, इंडिया से आप अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं, यू फील जेट लैग्ड। इट्स बिकॉज द हाइपोथैलेमस इज समवॉट नॉट येट attuned to that particular time zone. तो वो biological clock भी है आपकी. It is also important for temperature regulation, and it's also important for appetite. ठीक है, तो उसके ये सब चीज़ हमें थोड़ी सी समझनी है। तो अगर हाइपोथैलेमस को हमने डिस्टर्ब कर लिया, आप स्लीप Yeah. टाइट पहली कब आती है? 11 बजे आती है, और दूसरी आती है लगभग 3-4 बजे के आसपास। तभी रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स 3-4 बजे सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चलाने वाले ड्राइवर्स उनको झपकी लग जाती है, आँख लग जाती है, right? So 11 o'clock the first sleep time, 3 or 4 o'clock Yeah. the second sleep time. So कोशिश करो you follow the first sleep time. Now many times I get students who come and say sir हम सो तो लेते हैं 8 घंटे, क्या फर्क पड़ता है, 4 बजे सो के हम बाद में 11-12 बजे उठ जाते हैं। तो the Yes. quality of sleep isn't that good. So those students who are aware of the rhythms within the sleep and the kind of NREM, REM sleep patterns and the delta sleep and the delta ratio, they would understand that it is important to have a good delta ratio. That means the amount of sleep in that delta phase should be longer. जितनी लंबी होगी उतना Mhm. आपकी quality of sleep better होगी, and because sleep is also fulfilling, it helps refresh your mind. It is something which helps you churn information within, delete certain nonsensical information in your head. So it helps you. It serves many functions. तो ये एक तरीके से ज़रूरी है कि आप प्रॉपर टाइम पे स्लीप लें। दूसरा, थोड़ा डिसिप्लिन इन लाइफ। सो exercise regularly, that is something which is important these days. We are most of the times with electronic gadgets in hand, और मोबाइल का तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन है आजकल। तो रात रात को भी हम लोग मोबाइल के साथ ही सोते हैं, मोबाइल के साथ ही उठते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी बदलें, ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी वी शुड यूज टू आवर एडवांटेज, नॉट टू बिकम अ स्लेव, यू नो Yeah. under the Absolutely. technology. So that shouldn't Yeah. happen. चौथा ये है इसके अंदर कि थोड़ा बैलेंस बना के चलें ज़िंदगी का। उसमें अपनी हॉबीज़ भी रखें। पढ़ाई है, कल को आप काम करेंगे, तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप परेशानी में हैं तो ऑलवेज रिमेंबर इट्स नॉट जस्ट द सिचुएशन,
Many a times, whenever we are angry, whenever we are irritable, whenever we are sad, whenever we are happy, we always try to fix it or put that onus on the environment. आज ऐसा घर में माहौल था इसलिए हम ऐसा फील कर रहे हैं, आज हमारे दोस्त ने ऐसा कहा ऐसा फील कर रहे हैं, आज मेरे को इतने मार्क्स आए इसलिए मैं खुश हूँ, आज मेरे को ये खराब हो गया इसलिए मैं उदास हूँ. तो एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द एनवायरनमेंट. We tend to link it. So we externalize. There's a lot of externalization. We look for external factors for our mood states. But remember, between the external factor and your mood state, for a very short span of time, you run through certain set of thoughts. कुछ ऐसे दिमाग में जहन में ख्याल आते हैं जिनके आधार पर आपका मन खुश होता है, उदास होता है, गुस्से में आता है, अलग अलग तरह की इमोशंस आती हैं. एंड दैट इज द पावर ऑफ योर माइंड. आप उस समय अपने ब्रेन को किस तरह से ट्यून करते हैं, अपने मन को कैसे ट्रेन करते हैं, वो थॉट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. तो कई बार हम क्या करते हैं, सिचुएशन को बहुत बढ़ा लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली जाती हैं, और कई बार हम अपनी अपनी पोटेंशियल को बड़ा कम करके देखते हैं. हम सोचते हैं कि बस ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम तो इसको कर ही नहीं सकते पार. ये नेगेटिविटी, लगातार सोचते रहना प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है. यू बिकम अ विक्टिम इन योर ओन आईज. और आप अनजाने में अपनी खुशी की चाबी सामने वाले के हाथ दे देते हैं. वो जिम्मेदार है मेरी खुशी के लिए, जब तक वो नहीं देगा तब तक मुझे खुशी कैसे हासिल होगी, जब तक मुझे ये सब नहीं मिलेगा वॉट एवर आई थिंक आई शुड. तो आपकी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, वो बढ़ती चली जाती हैं. जितनी ज़्यादा आस लगाते हैं लोगों पर, सिचुएशंस पर, उतना हम अपने आप को कमज़ोर करते चले जाते हैं. अल्टीमेटली अपनी एबिलिटी है और अपनी मोटिवेशन और अपना डिटर्मिनेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्ट चैलेंजिंग दोज नेगेटिव थॉट्स. ट्राई टू एंटरटेन रैशनल, फीजिबल, पॉजिटिव थॉट्स. ट्राई टू काउंटर दोज नेगेटिव थॉट्स. और ये सोचो, डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड ऑल द टाइम कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे तो भाग्य ऐसे हैं, मेरा तो ऐसा ही, डेस्टिनी ऐसी है मेरी, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. तो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स जो है ना, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर की तरफ लेके जाती हैं, बिकॉज यू बिकम अ विक्टिम इन योर ओन आईज. डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. काउंटर इट एंड सी व्हाट कैन आई डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑलवेज हेल्प्स देयर. कुछ लोग हैं वो नशे में चूर हो जाते हैं इस पीरियड में कि चलो थोड़ी देर के लिए तो एस्केप कर जाए. दैट्स एन एस्केप रूट. एंड द मोमेंट यू ओपन योर आईज अगेन, यू रियलाइज द प्रॉब्लम इज बिगर नाउ. तो खाली वो प्रॉब्लम में डील नहीं कर रहे, एक नशे के साथ भी डील करना है. तो आपको अपने लॉजिकल माइंड को भी अलर्ट रखना है, एक्टिव रखना है, इमोशनल माइंड को एक्टिव रखना है, पर बैलेंस बना के चलना है. दैट बैलेंस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल. सो नेगेटिव थॉट्स को जब हम काउंटर करते हैं विद पॉजिटिव, feasible, rational thoughts, we call it as cognitive behavior therapy. That is also a form of self-help. You can do it yourself also. आपको अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, काउंटर करो उनको, है ना. फिर अपनी प्लानिंग करके चलो. एग्जामिनेशन आ रहा है सिर पे, है ना, लास्ट मिनट किताब उठाओगे तो ऊपर नीचे भागोगे. पहले से उसको प्लान करके चलो, इतने दिन मेरे हाथ में है, इतने इतने टॉपिक्स अगर मैं टाइमली कवर करूंगा तो मेरे को आखिरी मिनट इतनी एंग्जाइटी नहीं होगी. फिर मैं रिविजन, री रिविजन करूंगा. स्ट्रैटेजी होती है हर एग्जामिनेशन में. कौन से एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे समझने के लिए, उस पर फोकस करेंगे, है ना, धीरे धीरे करके. तो अपने अपनी एबिलिटीज़ को कैसे बढ़ाना है, अपनी एबिलिटीज़ को ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज करना है. आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लिंग्स हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. हम दूसरे को अपने मुताबिक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम उसको स्पेस नहीं देते हैं, हम बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं. ये सब नहीं करना. टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ रश. किसी भी चीज़ को अगर बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आपने उसके पहलू को टटोला नहीं, उसको समझा नहीं, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया. उस भागम भाग में, उस रैट रेस के अंदर, क्योंकि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, हम उन चीज़ों को प्रेस्टीज सिंबल बना लेते हैं, और उन प्रेस्टीज सिंबल्स को पाने के लिए हम अपने आप को खो देते हैं. माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हमें क्या करना चाहिए, जो भी कर रहे हैं ना, एक तो विद ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल टू वॉट यू हैव, बी ग्रेटफुल टू वॉट यू हैव, बी ग्रेटफुल टू ऑल द रिसोर्सेज दैट यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद. Be grateful to the God Almighty if you believe in one. At least nature, जो आपको ये सब प्रोवाइड कर रही है. आज ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, जहाँ हमने उस नेचर के साथ बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर दिया है, बहुत इंटरफेयर कर लिया है. उन चीज़ों को थोड़ा कम करें. रिलेट टू द एनवायरनमेंट. खाली आजकल देखो कोविड टाइम में एक तरफ ये सोचते रहो कि वो कोविड है, ये तो पता पैंडेमिक, इसकी वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, ठीक होंगे नहीं होंगे, ये तो पता नहीं कब तक चलेगा. अनसर्टेनिटी, है ना, प्रॉब्लम्स माउंट कर रही है माइंड में सोच सोच के. दूसरा, नहीं, नेचर इज हीलिंग इटसेल्फ. पहली बार हुआ है कि इंसान पिंजरे में बंद है और पक्षी और जानवर जो हैं वो खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं. चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स. गंगा यमुना अभियान कब से चल रहा था, कितनी साफ हो गई हैं. आसमान में तारे दिखने लगे हैं. दिल्ली जैसे शहर में कहाँ दिखते थे.
तो ये सब चीजें भी तो हो रही हैं साइमल्टेनियसली। सो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बनाओ। हाँ, प्रिकॉशंस लो, प्रिकॉशंस भी लो, अपने आप को बचा के भी चले, पर एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के चलना चाहिए लाइफ में। दैट पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प्स, द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हेल्प्स, डिसिप्लिन, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एज ओल्ड सेइंग, इन सबको प्रैक्टिस करें। ग्रेटिट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रिलेशनशिप को निभाना है तो वहां पे देखो आप क्या दे सकते हो। जब तक आप ये देखोगे मुझे क्या मिल रहा है, तो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहोगे। वो डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, डिसहार्मनी लाएगी, वो सारे डीज को खोल देगी और वो एक डिसऑर्डर के रेल में ले आएगी आपको, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हम करते हैं ना। खुशी जो है बड़ी छोटी छोटी चीजों में हासिल होती है, देने में हासिल होती है। हम लेने की कोशिश करते हैं जहाँ पे, और मैं को जितना कम करते चले जाते हैं। मैं मतलब सिर्फ मेरे नीड्स, सिर्फ मेरे नीड्स मुझे चाहिए, मेरी ग्रीड, मैं, वो आपको खराब करती है। जहाँ आप हम में विश्वास करते हैं, जहाँ हम एक दूसरे की हेल्प करने में विश्वास करते हैं। पुराने ज़माने में कम्युनिटी लिविंग थी, एक दूसरे की केयर करते थे। जहाँ केयरिंग है, शेयरिंग है, गिविंग है, ग्रैटिट्यूड है, वहाँ पे आप देखो कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम है। कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे देखा गया है, कई ऐसे सेक्ट्स हैं जहाँ पे साइकेट्रिक प्रेवलेंस डिसऑर्डर्स की इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो बर्डन इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा नहीं है, उसमें रैट रेस नहीं है, उसमें अनहेल्दी नेगेटिव कंपटीशन नहीं है, उसमें हॉबीज़ हैं, उसमें क्रिएटिव इंटरेस्ट हैं, उसमें मिलजुल कर कुछ पॉजिटिव करने की चाहत है, कोशिश है, जहाँ एक दूसरे का हम सहारा बन रहे हैं, जहाँ ग्रैटिट्यूड भी है, और गिविंग, शेयरिंग, केयरिंग, कंसर्न अंदर से, ये नहीं खाली दिखावे के लिए। जब आप ये चीज़ें करते हैं, अंदर से जुड़ते हैं, माइंडफुली जुड़ते हैं, माइंडफुली मतलब खाना भी खा रहे हैं तो स्वाद से खाएंगे, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी डिसिप्लिन छोटा या बड़ा नहीं। आज आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कुछ आप में से, वो कल को अलग अलग डिसिप्लिन लेंगे, कोई सर्जरी में निकल जाएगा, कोई गायनी में निकल जाएगा, कोई शायद साइकियाट्रिस्ट बन जाए, अलग अलग डिसिप्लिन है, कोई एनेस्थीसिया में निकलेगा। जो करो मन से करना, कोई लाइन छोटी बड़ी नहीं है। जब आप उसको अच्छे से करते हो, और इसलिए करते हो कि मैंने सामने वाले को ठीक करना है, वो मेरे पास आ रहा है, अगर मैं उसकी जगह होता, पेशेंट होता, मैं उस डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करूंगा, वो अगर सोच के करोगे ना अपनी नॉलेज के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो कभी गलत नहीं जाओगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, राइट। विद दोज फ्यू Yes. I think words and kind of uh, comments, I would like to open it for discussion and questions from your end. I think that's more important. Otherwise, it will sound more like a monologue. Yes. So Thank you so basically, much. we did ask the people to send in questions anonymously, and there were certain questions that people had sent multiple times and they were repeated, and one of which was that how can we stop ourselves from constantly agonizing over negative thoughts like ending our life? Like, is there a way to, like, some people constantly think about this I can't hear at you, every. people. So, any questions from your end? So, am I audible? Hello? I'm so sorry. I think Shreya's having a little bit of a connection problem. Sir, am I audible to you? Sir? No? Maybe he can't hear either of us. Am I audible? Shreya, can you hear me? Yes, I can hear you. Acha, okay, so we can hear each other. I don't know if Sir can hear us. Oh, so you can hear me fine. Yeah. Sir? I think I'll just. Sir, can you hear us? Oh, I'm so sorry to Okay. everyone who's watching. I think it's hanging the program. So just give us a second and we'll get back to you, and Sir. I'm just gonna send him a message. Sir, can you hear us? If I think the microphone or
I think Sir left the stream. Yeah, We'll he have must to have gotten add. disconnected. That's all right. Yeah. Sir, can you hear us now? Hi, Dr. Malhotra, can you hear us now? Oh, no, we can't hear him. Yeah. Oh dear. So you're Not not able to hear audible. you. No. So I think while Sir is having some technical difficulties, I would just like to point this out that through the means of this webinar and pre-webinar, we just had one goal in mind: to destigmatize the mental illnesses. That we just want to have a dialogue so that people become more accepting and they just Am I don't audible? treat it as something which is not normal. Yes, sir. Right. Sir is Yeah. back online. So we just wanted to say thank you for all the information that you've given us. It was very helpful. And Shreya was just going to move on to the question session, okay? Right. Okay. So am I audible? Yes, Shreya. Absolutely. Sure. Yes, yes. So, sir, actually, in the questions, there was one question asked by a lot of people, which was how can we stop ourselves from constantly agonizing over negative thoughts like ending our life? First and most important thing is define a purpose to your life. That's the first and the thing. I don't know how many of you have read this by Viktor Frankl, and it talks about man's search for meaning. And it talks about, and he has been a psychiatrist himself and came with the concept of logotherapy. And what he talked about in that book was about his own concentration camp experience, right? So when he was held hostage and he was in a concentration camp, and uh, how he survived that ordeal. And what he realized was that the people who were able to survive that ordeal were the ones who had some little sense of meaning and purpose to their life defined by themselves. Even if it could be having a cup of coffee once they are out of that concentration camp with their family, Yes. meaning that small, right? But a meaning and purpose to life is very important. In today's age, what happens is we are losing that meaning and purpose to life. Once you define that little meaning and purpose, then you strive towards it at your pace. Don't be in a rush, right? So life is like a process. It's like a journey. Let me just give you an example. It's like you take a train ride. There are two kinds of passengers in the train. Trains invariably get late, isn't it? In our country, we are used to it. So there are trains which will halt at every other platform. Then there'll be an unnecessary delay. There'll be one passenger who keep on grudging and grumbling and blaming the system, this, that, and the other, right? Spoiling his or her own mood. Can't do much about it. He cannot escalate, reaching the destination point. He can't do that. But he creates a negativity within himself and around him, right? So everybody gets sucked into it. Everybody starts blaming the system, the administration, the ministry, everything, goes out of hand. Whereas there's another person who would say, okay, ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म आया, उतर के चाय पीते हैं, फ्लेवर लेते हैं, जरा आबो हवा देखते हैं, यहाँ की गपशप लगाते हैं लोगों से, वहाँ की कोई किताब उठा के पढ़ लेते हैं, है ना? एक इंसान है जो वहाँ इंटरेक्ट कर रहा है, उस रास्ते को एंजॉय कर रहा है। तो जिंदगी भी एक रास्ते के समान है, आप उसको कैसे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं, बजाय इसके कि हम वहाँ पहुँच जाएं फटाफट, अभी आया नहीं, स्टेशन नहीं आया, अभी आया नहीं के चक्कर में आप सारा रास्ता परेशान।
तो आपने रास्ता तो बहुत ही दुर्गम बना लिया, अपने लिए मुश्किल बना लिया, खुशनुमा नहीं रहा। और दूसरा इंसान वो है जो उतर के आबो हवा देखता है, एंजॉय करता है, गपशप लगाता है, इंटरेक्ट करता है, उसकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बढ़ गया है कि नहीं? मुझे ऐसे ध्यान आता है कि हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी बहुत साल पहले माराकाश में, मोरक्को में, और वर्ल्ड वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर सोशल साइकियाट्री की कॉन्फ्रेंस थी। और वहाँ पे यहाँ से हम लोग जब फ्लाइट में कई सारे डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड पहुँच रहे थे, लोगों का सिम्पोजियम भी था वहाँ पे। और वहाँ पे जब हम सब पहुँच गए कासाब्लांका से आगे फ्लाइट जाश की, पर कासाब्लांका का जो एयरपोर्ट था वहाँ पे हम सब इकट्ठे होते गए, अलग-अलग, कोई अमेरिका है, कोई जापान से आ रहा है, कोई एशिया से आ रहा है, अलग-अलग कंट्रीज से लोग पहुँच रहे हैं। और जब वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं तो ये समझ में आया कि आगे वहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही। आगे फ्लाइट कब जाएगी, नेक्स्ट जो वहाँ से निकलेंगे माराकाश के कब होगा वो। तो और छोटा बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं था, बहुत सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं था, छोटी सी एक ट्रक शॉप थी, बहुत वहाँ पे शो विंडोज भी नहीं थी जो आप देख सकें। तो कई लोग परेशान होने लगे और बार वहाँ कोई अनाउंस करने वाला नहीं था कि फ्लाइट कब आए, नहीं आएगी, तो लग रहा था ये क्या हो रहा है, ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वहाँ पे जब बैठे-बैठे कई लोग गम्बल करने लगे, पर कुछ लोग जो है उन्होंने कहा कि आपस में इंटरेक्ट करने लगे, और तुम क्या प्रेज़ेंट कर रहे हो, हमारी कंडीशन है, हमारी वो है। कई बड़े-बड़े उसमें नामी लोग भी थे, जिन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया साइकियाट्री में, जिनकी किताबें भी लोग पढ़ते हैं, जो कि आपस में इंटरेक्ट करने लगे। तो हमारा मकसद क्या था ऑफ होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस या अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस वाज़ टू इंटरेक्ट, है ना? वाज़ टू इंटरेक्ट एंड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस। तो हमने क्या किया, हम सब लोग बैठ गए वहाँ पे नीचे ज़मीन पे, जितने साइकियाट्री अक्रॉस द, और हम सब गप लगाने लगे आपस में और इंटरेक्ट करने लगे, और जो हमने वहाँ प्रेजेंटेशंस करनी थी कहीं न कहीं उसकी भी छवि दिखने लगी, उसकी झलक मिलने लगी। तो हमने उस समय कैसे निकला, वो 4-5 घंटे बेकार वेट समय कैसे निकल गया, और कितनी खूबसूरती से जो हमने वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस में करना था, वो हमने यहाँ पे काफ़ी हद तक अचीव कर लिया, है कि नहीं? तो इस चीज़ को आपने कैसे यूज़ किया आपने, देखो, ये तो आपके अपने हाथ से है कि आप ग्रजेस रखते, ग्रम्बल करते, सिस्टम्स को ब्लेम करते, ऑर्गेनाइजर्स को ब्लेम करते, उसमें कोई हल नहीं निकलता। हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं उस समय, हम उस समय को कैसे अच्छे से बना सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और हम सब आखिर में हँसे, खूब एन्जॉय किया कि देखो जो मकसद था कांग्रेस का या कॉन्फ्रेंस का, वो तो यहीं पे अचीव हो गया, है कि नहीं? तो आपका माइंडसेट काफ़ी आपको डिफाइन करता है, आप किस तरह से सिचुएशन को लेते हैं, आप उसी सिचुएशंस में उन्हीं मुश्किलों को अपॉर्च्युनिटीज़ लेके, चैलेंज लेके उनको ओवरकम करो, बजाय ये सोचने के कि हम तो उसके अधीन हो गए, ठीक है? और एक मीनिंग और पर्पस रखो ज़िंदगी का। और मैं जो है वो सिर्फ़ अपने तक सीमित नहीं है, अपनों में भी जाया करो, और अपनों में अपने रिश्ते हैं, उनको भी सँभाल के चलना है। Thank you. So that was a really beautiful answer. If I think I should move on to the next question. That what are your tips for someone who gets very anxious before tests and exams? Something that even I went through and I think most of you would also go through. और मेडिकल स्टूडेंट्स तो मुझे है कि किताबें खोल के पढ़ते रहते हैं, इवन बिफोर द रूम के बाहर भी ना ये चल रहा होता था, तो अजीब सी एंग्जाइटी होती है। और मेडिकल एग्जामिनेशंस को तो वर्ल्ड का सबसे मुश्किल इम्तिहान भी कहा जाता है, ऐसा है। और खास तौर पे फाइनल ईयर, जब इतने सारे सब साथ आप लोग जगल कर रहे होते हैं और एक के बाद एक का इम्तिहान होता है। मुझे याद है 11-12 बजे एक एग्जाम से छूटते थे रात को, और अगले दिन सुबह फिर 7 बजे पहुंचना होता था नेक्स्ट एग्जाम के लिए सुबह। वाइवा अलग-अलग तरह के, ग्रैंड वाइवा, कभी दूसरे वाइवा, कभी स्टेज वाइवा, ये सब चल रहा होता है। और मेडिकल स्टडीज इतनी है, इतनी वास्ट है, मेहनत करनी पड़ती है, बाकी स्टूडेंट्स को भी मेहनत अलग-अलग डिसिप्लिन में करनी पड़ती है। तो कैसे हल निकाला जाए? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पहले दिन से, है ना? अपनी पेस, आप लोगों को पता है आपकी पेस क्या है ग्रास्प करने की। और मेडिकल टर्म्स और ये सब चीज़ें बहुत आसान नहीं है। मैं हँसा करता था कि इतनी मुश्किल क्यों होते हैं, और अब तो ज़बान पे चढ़ गए हैं बहुत अच्छे से। तो ये उस समय बड़ा मुश्किल लगता था। भई ये एक दवाई है लेवेटिरासेटाम, बोलने में इतना मुश्किल है, इट्स अ टंग ट्विस्टर, है ना? तो ये इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं? ऐसा कहा करते थे, नाराज़ भी होते थे। जब पढ़ते थे तब तो खैर ये दवाइयाँ भी नहीं थी। तो ये समझ में आने लगा कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको याद अच्छे से रहता है। एक बार पढ़ लेने से याद मुश्किल होता है, और जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो आगे चल के प्रैक्टिस जब करेंगे तो एक अलग फील्ड है, उसमें अलग एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं। एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी को कम करने का तरीका है कि अपनी पे चलें, स्ट्रैटेजी पहले ले डाउन करें, ठीक है? और रिवीजन के लिए स्कोप रखें, खाली लास्ट मिनट किताब खोलें, ये सही नहीं है। तो ये तो एक मेजर तरीका है। दूसरा, प्रायोरिटाइज़ करें कि आप
क्या चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, उस हिसाब से, और बाकी भी relax भी करना है। खाली बड़ी जो है ना, उससे मार्क्स बढ़ जाएंगे किसी के, जितना ग्रास्प करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, पढ़ेंगे, उतना आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, है ना? ये चीज बहुत जरूरी है। Yes, sir. प्लान इन एडवांस, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा बीच बीच में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सा रिलैक्सिंग के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा हॉबीज में भी ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो हर समय आप मोबाइल पे नज़र हो और पढ़ाई पे कम हो, फिर काम नहीं बनता। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, मैंने जैसे बताया कि वो डिसऑर्डर, डिसफंक्शन, ये सब बढ़ रहा है, मॉडल थिंकिंग हो रही है, फोकस कम है, कॉन्फिडेंस बहुत शेकी है, और फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, स्लीप एपिटाइट आपके अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो जो फिजिकल बायोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, उसकी बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स भी हैं, कई रिलैक्सेशन मेथड्स भी हैं, थोड़ा मेडिटेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल। अगर 10-15 मिनट मेडिटेट कर पाए, इवन दैट इज हेल्पफुल। Yes, sir. So, sir, actually, you mentioned that during a depression, we feel helpless, as if nobody is there for us, and we are sad all the time. So, I also experience these things a lot of times in my life. So, how can I decide, like, if I need professional help, or this is something that'll just pass by? How to decide, like, if I need to visit a professional Beta, I psychiatrist or couldn't hear you properly. Repeat your question. um So I just said that, like you mentioned in depression, that a person has these feelings of helplessness, that nobody's there to listen to him, and that nobody is there who could help him out of that sphere of mind. So, like every person does experience that in an everyday to day life. So how do I decide that I do need psychological help or psychiatric help from the professionals? How do I get psychological help is your question, isn't it? So we did Like, talk about self-help is one aspect of, but when you feel your sleep, your appetite is becoming quite disturbed, then we are entering into a biological domain, and there you might require medical treatment and help. There are different hospitals, both government and in the private sector, and most of the hospitals do have psychiatric departments, psychiatry and psychology departments. It is important to, kind of reach out to them. There are also helpline services which are available. There are free helpline services also available. Recently, the Ministry of Social Justice and Empowerment have launched a helpline, a free helpline service for students during this phase of COVID and associated uncertainties about career, about future, about anxiety related to those, by the name of Kiran. So that number is also available on their website. If you just Google that name Kiran and uh, on the net, you'll be able to get that number also. There are many such, and there are many NGOs also which are having their own helpline services for suicide prevention. Roshni is one of them. There are many. I mean, some, Sanjeevani is another. There are so many organizations which are doing good work, and one should not hesitate in reaching out at that time. Even speaking your mind to your closest confidant can help at that point of time. And for the confidant, that person should not isolate that individual and make oneself available. You need a shoulder to lean on, you need a hand to hold on to you at that point of time, there for you, to be able to help you out of that situation. And timely intervention, don't associate any stigma with psychiatric medication or visiting a psychiatrist. The Western world has understood that. I think we are also understanding it now, and we should not hesitate. Just like getting yourself treated for cough and cold, so are problems associated with the mind. Like I said, mind is a function of your brain. It's not something which is just created by you and your whims and fancies. It's also a portion of your brain, which is a structural organ. So it's important to look after itself. जान है तो जहान है, और दिमाग की सेहत तो सबसे अच्छी रहनी चाहिए, राइट? और कभी सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आते हैं तो ऐसे सोचना चाहिए कि देखो, इट्स लाइक एन इकोसिस्टम, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पुट टुगेदर, हाँ, वर्किंग टायरलेसली डे इन डे आउट to define yourself
है ना, आपके हाथ सब सलामत है, सब काम कर रहे हैं दिन रात। आप रात को सो रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर फिर भी जग रहा है, you are taking those breaths even when you are sleeping, your heart is still pumping when you are sleeping, the whole body is working tirelessly, laboriously to help you survive। and ये सब क्या कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली आपके ब्रेन के नीचे अधीन है कि भाई आपका दिमाग उनकी सेवा, उनका ध्यान रखेगा। सेवा तो क्या, सेवा तो वो कर रहे हैं आपके, पर वो आपका दिमाग उनका ध्यान रखेगा। और अगर आपका दिमाग गलत से चीजें करना शुरू कर दे, चाहे खान पान गलत शुरू हो जाए, चाहे नशे में आप लग जाएं, तो हर बॉडी को खराब कर रहे हैं, चाहे वो आपका लंग्स है, चाहे लिवर है, चाहे हार्ट है कि नहीं। और ये सब आपके लिए काम कर रहे हैं दिन रात। तो बी ऑनेस्ट टू दिस इकोसिस्टम, डोंट सी योरसेल्फ जस्ट एज वन, सी योरसेल्फ एज एन इकोसिस्टम, ट्राई टू क्रिएट हार्मनी इन योर इकोसिस्टम, राइट। आप अपने आप को हार्म कर लेते हैं, गुस्से में आए, परेशान हुए, आपने अपनी नस काट ली। क्यों काटी? उस नस ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो दिन रात आपकी मेहनत कर रही है, आपके साथ जुड़ी, आपको आपके होने का एक्सपीरियंस दे रही है, आपके वजूद का एक्सपीरियंस दे रही है। आप उसको क्यों खराब कर रहे हैं? उससे क्या हल निकाल रहे हैं? Why are you being so ungrateful or so cruel towards those cells, millions and millions, which are defining you and working tirelessly to help you survive, right? बल्कि उनको तो साथ लेके चलना है, उनकी तो और केयर करने की आवश्यकता उस समय जब आप टेंशन में। तो इस तरह के माइंडसेट को बनाएं। और फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ना ग्रजेस रखते हैं लोगों के खिलाफ, उसने मेरा ये नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया। रिश्तों में, है ना, हमारा ही क्या है, क्या ही क्या है। पेरेंट्स को लेके कई बार बच्चे ऐसा बोल देते हैं आजकल। पेरेंट्स की कभी इंटेंशन बच्चे के लिए बुरी नहीं होती, ज्यादातर, अधिकतर। और कई बार हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो रिश्तों में भी खस लाती हैं, परेशानियां लाती हैं। और जब हम नेगेटिव ग्रजेस रखते हैं ना, लॉट ऑफ एनर्जी गेट्स सीप्ड इनटू दैट। होता क्या है, फ्री फ्लो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी नहीं होता सिस्टम में, क्रिएटिव पोटेंशियल्स नहीं निकल पाते बाहर, क्योंकि हर समय हम कुड़सड़ रहे हैं अपने अंदर। Don't do that to yourself. Many times you say anger punishment you give to yourself for the mistakes of others. और आप देखिए, आप कहते हैं अच्छा मैं क्यों उसको माफ कर दूं, उसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया, ऐसा किया, वैसा किया। अरे बाबा, उसको थोड़ी ना पता है आपने माफ किया कि ना। आपने अपने मन से उस नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश की। आप उस नेगेटिविटी को निकाल के तो देखिए मन से, फिर देखिए आपके अंदर कितना पॉजिटिव हीलिंग फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, राइट? So there was this another question that how can you motivate a person with mental illness to accept the illness and take action on it rather than it ruining their lives? मेरे ख्याल से आज का सेशन बेटा इसी के ऊपर फोकस था कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ यू रिकॉग्नाइज। सबसे पहले तो अवेयरनेस होगी तो ये समझ में आता है। दूसरा, मैं अकेला नहीं, है ना। और अगर मुझे प्रॉब्लम आ गई तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। किसी को भी हो सकती है, जैसे कोविड आज किसी को भी हो सकता है कि नहीं। इसी तरह से प्रॉब्लम भी, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है। किसी को कभी भी हो सकती है, मुकाम में हो सकती है। I see children also, I see elderly people also above the age of 9. प्रॉब्लम तो किसी एज पे भी हो सकती है, एक एज पे भी हो सकती है लाइफ में, है ना। तो उसको रिकॉग्नाइज करना टाइमली जरूरी है। टाइमली रिकॉग्नाइज करके टाइमली हेल्प सीकिंग उसके लिए जरूरी है कि मैं टाइम का करा सकूं, मैं उस चीज को डील कर सकूं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और तीसरा ये कि आई विल नॉट बी मेड फन ऑफ। और ये जो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट्स ना, दे आर डेल्ट विद क्वाइट कॉन्फिडेंटली और सेंसिबली। और जो आपकी फाइल्स भी बनती हैं, जो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स भी होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ऐसे नहीं हम ओपन में नहीं शेयर करते इन चीज़ों को, तो आपकी निजी चीज़ है, ठीक है। जैसे आप उसका रंग तो नहीं बताते फिरते हैं ना सबको जिसको मिलते हैं। इसी तरीके से जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है वो एक हिस्सा है, वो एक फेज है जिसमें से आप गुजर रहे हैं। वो आपकी टोटलिटी डिफाइन नहीं करती। तो उसका मतलब बाइपोलर हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया हूँ, ऐसा नहीं है। आप बोलते हैं मैं ट्यूबरकुलोसिस हूँ, मैं मलेरिया हूँ, मैं टाइफाइड हूँ, ऐसा तो नहीं बोलते ना। टाइफाइड हो गया, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। और फिर अगर आप उसका नेगेटिव पढ़ते चले जाते हैं नेट के ऊपर और आप सोचते हैं वो सब नेगेटिविटी आपको हिट करेगी, तो यू ब्लोन इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड यू मेक द सिचुएशन अनसरमाउंटेबल, व्हिच इज रॉन्ग, राइट। So it becomes important to recognize these things in time. It's very important to resolve these things in time. बजाय सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, वो फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और अक्सर पेशेंट्स आके बाद में हमें कहते हैं कि सर काश हम 1 साल पहले ही आ जाते, 1 साल हम इतना परेशान होते रहे, इतने साल हम ऐसे इतनी परेशानी झेलते रहे, इतना ईजी था, इतने अच्छे से हम ट्रीट हो सकते थे, पता ही नहीं था।
So these things are treatable. Quality of life improves. आज की डेट में क्या है, जिंदगी लम्हों में तो है ना कैद है, तो वो लम्हे हमने इतने खराब कर लिए, इतने परेशान कर लिए अपने आप को, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब कर ली, रिलेशनशिप स्पॉइल कर लिए उसके चलते, अपने पे नहीं रखा, खुद को सेल्फ हार्म बिहेवियर गए। ये सब करने से बेहतर है हम उसका टाइमली ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते। इट्स जस्ट लाइक अगर मेरी आई साइट थोड़ी खराब हो रही है, मैंने चश्मा लगा लिया है ना, अब इस चीज का मजाक क्यों बनाते हैं कि इसने चश्मा पहना, चश्मा की जरूरत हो सकती है। और अगर मैं चश्मा नहीं पहनूंगा और मैं आंखों को ऐसे स्ट्रगल करके देखता रहूंगा तो मेरी आई मसल्स ही ज्यादा वीक होती चली जाएंगी ना, मैं अकोमोडेशन नहीं ठीक से कर पा, मेरी आ जाएंगी, कल नंबर और बढ़ेगा। तो इसी तरीके से मन की प्रॉब्लम्स हैं, इनको टाइमली रिकॉग्नाइज करना है, इनको टाइमली ट्रीट करना है। So I think we've covered all the questions that were asked by the people. And I think just one question that there was left, that how can we adapt to situations that may not be ideal for us? If you could share a few points on that too. See, situations will never be ideal, is what I would say. The more strive towards perfectionism, the more we say कि सब कुछ perfect मिले मेरे को, क्या खुदा ने, भगवान ने क्या नदी स्ट्रेट लाइन बनाई? ऐसा नहीं है ना। क्या उसने माउंटेन को ऐसा बनाया जैसे नर्सरी का बच्चा बनाता है? ऐसा तो नहीं है ना। हर चीज में अलग अलग रूप है, अलग अलग एक्शंस है, क्या फ्लो है। लाइफ इज लाइफ, जितनी ऑब्स्टिकल्स आती है, रिवर अपना रास्ता थोड़ा बदल देती है, आगे चलती बहती चली जाती है, रुकती तो नहीं वहां पे। जहाँ रुकेगी वहां स्टेग्नेशन आएगा, है कि नहीं, वहां काई जमती है। ऐसी लाइफ का फ्लो है, उसको बढ़ना है आगे। प्रॉब्लम्स आती हैं, दे आर नॉट अनसरमाउंटेबल, ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस टू देम, है ना। द मोर वी लुक एट एन आइडियल वर्ल्ड, एन आइडियल पर्सन, हो रही हैं। आज हम कहते हैं हमारे मन मुताबिक हो, जो हमने इमेजिन किया वैसे ही होना चाहिए। अब वो तो फिर कोई डॉल भी नहीं मिलती वैसी, है ना। कोई टॉय ऐसा नहीं मिलता जो बिल्कुल अपने मन मुताबिक। हर एक चीज में कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस हैं, रिश्तों में अडेप्टेशंस हैं, है ना। तो ये एक तरह की सिंक्रोनी है, आप कैसे अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं सिचुएशंस के साथ, हालात के साथ। इसकी दुनिया मेरे मुताबिक चले ऐसा नहीं, आपको ढलना पड़ता है दुनिया के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से। जितना हम दुनिया के हिसाब से, नेचर के हिसाब से अडेप्टेबल हो जाते, थोड़ा सा हो जाते हैं, अपनी वैल्यूज को प्रिजर्व करना है, उनको नहीं तबाह करना। वो तो बेसिक आपका बैकबोन है ही है, पर उसके आगे फ्लेक्सिबिलिटी, बैकबोन होनी जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है, बैकबोन तो जरूरी है, वैल्यू, बेसिक वैल्यू सिस्टम्स होने जरूरी हैं। बिलीफ सिस्टम्स और वैल्यू सिस्टम्स भी बेस्ड है ना हमारे, और बिलीफ सिस्टम से हमारी थॉट्स बनती हैं, थॉट से ही हमारे इंटरैक्ट बनते हैं। बिलीफ सिस्टम तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें वैल्यू होनी चाहिए, तो वो एक तरह की बैकबोन है। पर उस बैकबोन में लचीलापन भी होना चाहिए थोड़ा सा, तभी चल फिर सकेंगे ना। अगर बैकबोन आपकी बैम्बू स्पाइन हो गई तो फिर तो आप हिल नहीं सकते, समझ रहे हैं। तो यानी मैंने कहा वो पत्थर की लकीर, आप सारे मानो उसको, इतनी स्ट्रांग गई तो फिर वो गलत हो जाता है। तो हमेशा बैकबोन होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, थोड़ा सा दिन में भी, दिनचर्या में भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, पर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, थोड़ी सी लचीलापन भी थोड़ा सा होना चाहिए। अगर खाली लचीलापन होगा और बैकबोन नहीं होगी तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। और अगर सिर्फ बैकबोन बैम्बू स्पाइन हो गई, जुड़ गई वहां, वहीं जड़ भर्तरी हो गई, तो फिर तो कुछ काम नहीं बनेगा उसका। तो has to have a spine and have to have flexibility in the spine. So I think with this question we've come to the end of this webinar and all the questions that people had for you. If anything you would like to say, last few words of wisdom that we can have from you on how to go towards life with a positive mental attitude and a healthy lifestyle, if any last words you would like to say. I'm not able to hear you, Shreya, properly. I missed the sentence that you said. So I just said that, I think we've come to the end of this. If you could repeat. Yes, sir. So we've come to the end of this webinar, and I just wanted to pick your brain for some last pearls of wisdom, if you could provide us, so that how can we move ahead in our life with a positive mental attitude and a positive outlook towards life. Okay, so how to develop a positive mindset? These days we talk about, yeah. Am I audible to you people? Yes, sir. Audible? So how to, yes, sir. today Yes, we're sir. talking about wellness.
when we are talking about wellness, we are talking about mindfulness. Mindfulness means be alert, be cognizant of what is inside and around you, but don't be quick to judge and don't be quick to react. At times, when we become too judgmental, we become too reactive, we become over expressive, we interfere with the space of others around us, we create that disharmony, that disarray. And we should give that, कहते हैं ना, जीने दो जिंदगी में ये करना चाहिए. Forgiveness is important. Don't hold on to grudges. Try to define some little structure to your day. Try to eat healthy, try to exercise a bit. All these things are very important. Sleep in time. That's a restorative function of the brain. है ना, बहुत जरूरी है कि क्वालिटेटिव आप स्लीप लें, अगले दिन नहीं तो आप परेशान रहते हैं. और क्या मैं कर सकता हूँ, मैं किसी रिश्ते में, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ. कल को पेशेंट है तो उसकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ. जब आप ये देखते हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ अपनों को या जो आपके साथ जुड़ता है उसको, तो आप रिश्ते भी खूबसूरत निभा पाते हो. आप जब आप ये देखते हो वो मुझे क्या दे रहा है, मैंने तो ये दिया, उसने मुझे दिया बदले में कि नहीं, तो फिर हम तो बार्टर सिस्टम कर रहे हैं, है ना. और रिश्ते तभी रहते हैं गिव गिव मल्टीपल टाइम्स या फिर जब हम टेक 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 ज्यादा करना लग पड़ते हैं ना, तो वो नहीं चलता. ठीक है, वो इक्वेशन ठीक रखनी है. और डोंट शाई अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, जब तक प्रॉब्लम्स हैं तब तक जिंदगी है, प्रॉब्लम्स खत्म तो जिंदगी खत्म. प्रॉब्लम्स तो रहेंगी. और आज में जियो. अक्सर हम खो देते हैं आज को, जब क्योंकि हम वी आर आइदर फोकस्ड ऑन द पास्ट एंड वी कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू पास्ट स्टेट्स एंड और वी आर टू एप्रीहेंसिव अबाउट फ्यूचर कल कैसा होगा, है ना. तो हम आज में डोंट लिव इन द हियर एंड नाउ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन द हियर एंड नाउ and then develop an attitude of gratitude. That is also very important. Be grateful to what you have, what your parents have been able to provide, what your society, what your nation has been able to provide you with, what your friends provide you. Fill your day with positivity, है ना. और कभी नेगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हो तो टू चैलेंज देम. किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, कोई उसकी अच्छी चीज भी याद करने की कोशिश करो, कुछ तो एक अच्छी चीज भी होगी उसमें. ट्राई टू डाइल्यूट इट. और अगर लगता है कि नहीं, thoughts have become too negative or you are entering into the D zone that I talked about, then don't hesitate in seeking quick advice and quick professional treatment. Right? उसके ऊपर बैठो नहीं, जल्दी इलाज करो. So yes, I think we can all implement all these things that you just said. And with this, we come to the end of this webinar. And thank you, sir, for joining us. Thank you for sparing time out of your such a busy life schedule to help us out with our doubts and inform us and teach us with your wisdom of knowledge. I think that is it from this webinar. Thank you for everybody for joining us. It were two wonderful days with all of you, and with today's webinar, I would just like to add that after this, you all will be given a questionnaire in your respective WhatsApp groups. Please fill that questionnaire, and because on that basis, we'll be emailing you your e-certificates. So I request you all to complete that questionnaire, and you will. So thank you all for joining us. I don't if and Ekta or South, if you would like to say anything. Um, That's all. Thank you so much, yeah. sir. On behalf Thank of you. IFMS family, everyone who's organized the event, from all of the participants as well, it's been very helpful listening to what you had to say. And I think that everyone has taken away a lot from your knowledge and what you've told us today. Yeah, I definitely learned so much today, and so thank you for agreeing to this and everybody for joining us. It would not have been a success without all of you and everybody who was a part of this event. And please, Thank you so much, sir. we hope to bring you all such events. Thank you so much. I think it's been a great effort, Shreya, Ekta, and the IFMS team. And thank you, students. You are the young minds. You are the future of the country and for the world. And I think it's been an absolute privilege to interact with young minds and to also talk about such a very sensitive and important area of our health, which is our mental health. And it's high time we destigmatize it, don't make fun of it. We try and understand it, and we try to sensitively and sensibly deal with it. Thank you so much. It was a pleasure to interact.
Thank you Thank so you, much. sir. We Thank look you, sir. forward to working with you again. This has been very helpful. Yes, sir. So we can end this. Yeah, and just before we go,